हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामेश्वर। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एज वी ऑल नो द क्लास 5 न्यू टेक्स्ट बुक इज़ देयर। और जो पहले हम ईवीएस पढ़ते थे उसकी जगह पे अभी जो नया बुक आने वाला है उसका जो टाइटल है दैट इज़ ताऊ। एंड ताऊ इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ताऊ इज़ द वर्ल्ड अराउंड अस। तो अभी हमें पूरा बुक मार्केट में या कहीं वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हमें फर्स्ट यूनिट दिया गया है। ओके, और द फर्स्ट यूनिट की जो पीडीएफ है हमारे पास अवेलेबल है। एंड वी हैव अ कंटेंट of the textbook, means in this textbook how many chapters or how many units are there. So this book is divided into 10 units and 10 chapters are there. So first one is the life around us. So हमारे पास अभी ये इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। सो चिल्ड्रन, so life around us, from the uh, name of the unit, means whatever the things which are around us, about that it is given. So let us see in this unit what we are going to discuss. So in this unit there are two chapters. One is water, the essence of life, and the second is journey of the river. Means it is based on the theme water only. जो फर्स्ट यूनिट है वो कौन से थीम पर बेस है? वाटर से रिलेटेड। तो चलो देखते हैं हम व्हाट इज गिवन इन दिस यूनिट। यूनिट 1, दैट इज लाइफ अराउंड अस। सो लाइफ अराउंड अस, अभी हमने बताया कि वट एवर द थिंग्स विच आर अराउंड अस, जो भी हमारे अराउंड में है, मीन्स लाइक बर्ड्स, एनिमल, इंसेक्ट्स, और सम ऑफ द नेचुरल थिंग्स, और सम आर water sources. This is all about in this unit. So first chapter, the chapter name is the water, the essence of life. Water, the essence of life. Means in this unit we are going to study about the how water is important, how water is essential for living being. So देखते हैं। तो it is raining. Afrin rushed to the window where Jyoti was already watching tiny raindrops slide down the glass. In this picture you are seeing that the Afrin and Jyoti, they are observing the water source here. Okay, and they are watching that the how raindrops slide down the glass. So where do you think all this water comes from and where does it go? They are thinking from where water comes, where it goes. That ask Afrin. She is asked to Afrin, come, let us follow the journey of a water. But first let us see how much water there is on the earth. So for example, if we see, we all know the earth. So earth is covered with, for example, this is earth. Means if we see, if the earth is divided into four equal parts, so if we see that this much amount of is water on the earth, means near about 71% of the water, 3/4 part of the earth is covered with water, children, and remaining one fourth part or 29% of water is a land, 3/4 पार्ट। इवन आप अपने हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था ब्रिज कोर्स में।
तो ब्रिज कोर्स में हमने ग्लोब में देखा था कि द ब्लूइश पार्ट ऑफ द अर्थ इज नथिंग बट द वाटर। तो इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है बच्चों, व्हाट वी कॉल ब्लू प्लैनेट। ठीक है, वाई? बिकॉज द मोर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, more part of the earth is covered by a water. So although most of the earth's surface is covered with water, the majority of it salty living less, but it जो 71% में से 71% जो है वाटर, उसमें से लगभग 3% ही वाटर जो है हमारे पीने लायक है, या हम इसे कह सकते हैं फ्रेश वाटर। क्या कहेंगे बच्चों? फ्रेश वाटर। और बचा हुआ जो भी पानी है वो कैसा है? सॉल्टी है, खारा है। मीन्स वी कैन नॉट यूज इट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, सो दिस थिंग वी हैव टू कीप इट इन माइंड। सो in this lesson the picture is there. See here, the comparison is shown here. So amount of fresh water, all living being, people, animal, birds, plants depend on fresh water. We all know, we all require the fresh water. जो भी लिविंग बींग्स है सबको कौन सा पानी चाहिए रहता है? फ्रेश वाटर वी हैव रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल. It is essential for drinking, growing crops, daily activities. Many plants, animals also live in fresh water. Without water, life would not be possible. So now imagine means जो comparison की गई है, for example ये 200 ml water है और 5 ml of spoon, the 5 ml of water in the spoon, means इसे कहेंगे हम salty water और ये है फ्रेश वाटर। मतलब इतना ही अमाउंट ऑफ वाटर हमारे अर्थ पर फ्रेश है, मीन्स कंपैरिजन के लिए। ठीक है, मीन्स दिस सॉल्टी वाटर वी कांट यूज फॉर ड्रिंकिंग, वी कांट यूज फॉर ड्रिंकिंग. ओके, सो this is the just comparison. Imagine if all the water on earth in this glass, then the fresh water would only be as much as in a teaspoon only. So now here is, do you know the salt mines of Gujarat are vast flatlands where seawater is dried to collect salt. It is one of the largest salt producing areas in India. So we all know, student, we get the salt from the sea. Okay, so in Gujarat, this is the fact. So fact we must know. The fact is that गुजरात में जो भी फ्लैट लैंड्स हैं, वॉस्ट फ्लैट लैंड्स, वहाँ पे सी वाटर क्या होता है? ड्राई किया जाता है, एंड फ्रॉम दैट वी आर गेटिंग द सॉल्ट. ठीक है, सो दिस थिंग वी जस्ट कीप इट इन माइंड and let's move further. So here is that one activity is there, and in this activity read here, where can we find fresh water? Identify the different freshwater sources from the image given below and write their name. So children, here are the pictures of the sources of water. From class 2, class 3 also we learn about the sources of water. So main source of water is what? Main source, if I ask, so main source of water is rain. मेन सोर्स कौन सा है? रेन है. ठीक है, सो रिमेनिंग सोर्सेस आर just like in first picture we are seeing it's just a lake, second sea or ocean. So these are the big water bodies. Lake, pond are small water bodies. Then glacier, then third one again
it's a lake or pond. This is groundwater, then river, well, and rain. So first we have identify the picture. So it may be a pond. So from this, some sources which gives us a fresh water. Okay, like a river, glacier is the biggest source of fresh water. Then well is also giving a fresh water. Rain is also giving a fresh water. So Jyoti was curious, is there water in the air too, and is now snow a form of water? So Jyoti वो curious थी, उत्सुक थी. She was very excited to know about this thing. Okay, so in this video only this much we are going to discuss. Okay, so remaining part of the lesson we will see in the next video. So I hope it is clear whatever we have discussed in this video. Thank you.